Today we are going to discuss RBI Act. You all know that for banking, two major regulations are there. One is Banking Regulation Act and the other one is Reserve Bank of India Act. Okay, as the Reserve Bank of India Act is enacted in the past years, in the year 1934, then came the Banking Regulation Act in 1935. So we are going to discuss about RBI Act first. Okay, yes, let's start. You all know that Banking Regulation Act came in 1949 and RBI Act in 1934. RBI and the Government of India have control over banking operations from licensing to closure. This control comes from the powers given by two institutes. Okay, in India, anything can happen to banking industry in the whim of Reserve Bank of India and Government of India. ये दो organizations, Government of India, RBI जो चाहेगा वही होगा. Who is premier? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसका नियम चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम चलेगा. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फाउंडर या फिर इनिशियल शेयर होल्डर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक किसके पास है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. तो किसका नियम चलेगा? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नियम चलेगा. ठीक है, नॉट ऑल लीगल प्रोविजंस अप्लाई टू द बैंक. ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट देयर आर सो मेनी रूल्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, all that provisions don't apply to banks because banks primarily follow BR Act and RBI Act. Okay, the RBI Act is popularly have two schedules, Schedule 1 and Schedule 2. Schedule 1 is about the discussion of various banking rules, but Schedule 2 is the list of banks that are governed by Reserve Bank of India. If a bank is not in Schedule 2, what does that mean? अगर कोई बैंक आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? ओके, फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट. सेकेंड शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ बैंक्स हु आर गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इफ ए बैंक इज नॉट देयर इन द सेकेंड शेड्यूल, दिस मीन्स इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज नॉन शेड्यूल बैंक, राइट, एंड इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, you can crack SBI CBO with only two things. One is the right content and the another is the right intent. I have the right content for you, but do you have the right intent to crack this exam? I know that most of you are struggling with your worst work culture and not having enough time to prepare. But simply giving 2 hours a day can give you selection. We have a wholesome course here for you. So don't waste your time here and there. Join the best in the industry and start preparing now. Even in the last 50 to 60 days, there is enough time to cover the syllabus. And we have given you additional test series and we are coming up with the Ready Reckoner to aid your preparation. So don't waste your time. Now watch this sample session, then you will understand why the courseware of Knowledgist is so important for you to get selected. So see you at the other side. Thank you. Yes, Schedule 1 is the list of act. Schedule 2 is about the list of banks. Small Finance Bank is also a scheduled bank. So just a background of RBI Act. In 1926, Royal Commission proposes a Central Bank of India. In 1927, initial bill for Central Bank is introduced, but later it is withdrawn. In 1933, new bill for RBI establishment introduced, and in 1934, this license came. Bank came. This act came. And in 1st of April 1935, it established commencement has started with just 5 crores of capital. एग्री के लिए भी डिफरेंट क्लास होगा. ये पहले कॉमन क्लासेस सबको लेना है क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज है. ठीक है, फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक आएगा. विदाउट नोइंग द बेसिक बैंकिंग हाउ कैन यू गो फॉर अदर टॉपिक्स. ठीक है, सब कुछ कवर होगा, राइट. लैब 3 लोकल एरिया बैंक है जो सेकेंड शेड्यूल, नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट शेड्यूल्ड देमसेल्फ. इवन लोकल एरिया बैंक्स कैन शेड्यूल देमसेल्व्स. ओके, एंड रिमेंबर हिल्टन योंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन उसको बोलते हैं, जिसने आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया. ठीक है, एंड ऑल्सो आरबीआई हैज सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक फॉर बोथ बर्मा एंड अदर कॉलोनीज ऑफ इंडिया लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ठीक है, in 1949 India government nationalized RBI. Let's go to the section 1.
Section 1 says it is applicable throughout India. The second 2 gives the definition of scheduled bank, okay, which is listed in the second schedule of the bank. Section 3 talks about RBI's establishment. Section 4 talks about 5 crore of its initial capital, but as of 31st March, the reserves were 6,741 crores. Now, obviously, it is increased. Section 7, it is one of the most important chapters, most controversial chapters. It says that the central government has the authority to issue directions to the central bank for public interest, right? But in consultation with governor. सेक्शन 3 में क्या है समझने के लिए नहीं समझ पाए, ठीक है, मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ. सेक्शन 3 में आरबीआई कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में लिखा है. नॉट एन इम्पोर्टेंट सेक्शन. फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 7. Section 7 says RBI autonomous body. RBI is an autonomous body, but as and when required, central government can give directions, not suggestions. It can give directions. आपको यही करना है, ठीक है. बॉडी तो ऑटोनोमस है, बट जैसे कुछ लोगों के माता पिता होते हैं, बोलते हैं कि बेटा तू जो करना है कर. क्या इसका ये मतलब है आप किसी को गोली मार के आ जाएंगे? नहीं. वो आपको फ्रीडम तो देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई बाप होता है, ये मैं बोल रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा, लाइक ए पेरेंट सेज, राइट. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज टू आरबीआई, यू आर ऑटोनोमस बॉडी, टेक योर ओन डिसीजंस, डोंट आस्क अस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको जो करना है करिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए, कितना रेट रखना है, हाउ मच रेपो यू वांट टू कीप, डू इट, ओके. बट व्हेन आई से डू दिस, यू हैव टू डू दिस. But normally or directly, Government of India has never invoked the Section 7 status. ठीक है, मतलब कभी इतना कॉन्फ्लिक्ट वाइड ओपन नहीं हुआ है जब सेक्शन 7 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया हो कि आपका ये जो सर्कुलर है हम उसको निरस्त करते हैं, अपना जो नियम है उसको चालू करते हैं. एक बार अरुण जेटली के टाइम पर सेक्शन 7 आने का नौबत था, बट देन द गवर्नर हैज टू अमेंड. ठीक है, अभी तक ऐसा डायरेक्टली ओपनली नहीं हुआ है. जैसे ड्यूरिंग YB रेड्डीज टेनर देयर वाज सच इंसिडेंट, तो वो फिर उनकी किताब में वो लिखा हुआ है. ठीक है. So I sincerely hope that your preparation for SBI CBO 2025 is at right pace. We have released the test series, the entire content, pre-recorded sessions with the ongoing live classes. Don't miss out any class or any single MCQ provided by Team Knowledgist, because one single mistake can land you once again with your same old miserable private bank. So if you want to come out from this kind of environment, then this could be your last chance. Here is a sample session for the newcomers to watch and introspect what are you currently doing. अगर आप कहीं किसी कोर्स में फंसे हुए हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में गलती से डिस्काउंट देखकर, ये देखकर, वो देखकर आप फंस चुके हैं, तो अभी भी समय है. गेट आउट ऑफ दैट and join Knowledgist, the best in the industry. Find the classes. If you can relate with the content, then you can crack this exam too. So see you at the other side of Knowledgist. Thank you.